Jai Shri Ram. We are going to begin with Satsang. We are going to start with the preliminary purificatory mantras. Sprinkle water on all the prayer goods as well as the people participating in the Satsang. Om Apavitraha Pavitro Va Sarvavasthangato Piva Yah Smaret Pundarikaksham Sabahyabhyantarah Shuchi. You're going to sip water from the palm of the right hand once with each mantra. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Rinse your hands. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. So you can put on a kus ring if you have one available. Om Pavitre Stho Vaishnavyo Saviturvah Prasava Utpunam Yachidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhi Tasyate Pavitrapate Pavitraputasya Yatta Kamaha Pune Tatchakeyam. Apply a chandan dot on your forehead. Om Chandanam Bandhate Nityam Pavitram Papanashanam Papadam Harate Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. You may light your lamp and you can light an agarbatti also. Om Ho Deepa Tum Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamayang Kritang Puja Grihastejo Pravardhaya. Om Deepaya Namaha. Sprinkle water around yourselves. Om Pridhvitvaya Loka Devi Tvam Vishnunadrita Tvam Cha Dharyamam Devi Pavitram Kuru Chasanam. We'll now begin with the invocatory mantras, Ved mantras, etc. You can follow on your screen. Om 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 Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurudevo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyanamoolam Gurormurtihi Poojamulam Guroho Padam Mantramulam Gurorvakyam Mokshamulam Guru Kripa. Om Swasti na Indro Vridhashavaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti Nastarikshur Arishtanemihi Swasti no Brihaspatir Dadhatu. Om Payah Prithivyam Paya Oshadhishu Payo Divyantarikshe Payodah Payaswati Pradishah Santu Mahayam. Om Vishnurarathamasi Vishnoha Shnaptrestho Vishnoha Syurasi Vishnurdhruvasi
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमेद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतान् देवानागं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां gwam सख्यम् उपसेदिमा वयम् देवानः आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तान् पूर्वयानि विताहुमहे वयं भगं मित्रं ददितिम् अक्षमस्त्रिधम् अर्यमनं वरुणगों सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत। ॐ तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् धिष्णयायुवम्। ॐ तमीशानन् जगतस्तस्तुषस्पतिं धियन् जिन्वमवसेहुमहे वयम् पूषानो यथा वेद सामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योर्अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पृषदश्वा मरुतः पृश्निम् आतरः शुभं यावानो विततेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं सस्तनुर्भिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधयारीरिषतायुर्गन्तौः। ॐ अदितिर्ध्योरदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः स ओजो मही प्राणपानौ। ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः
पुत्रिर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृभनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॐ आयुष्यं वर्चस्य gwं रायस्पोषमोदभिदम् इदगं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राया विशतातु माम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर् विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ॐ हे हे रम्भ तुमे ये हि अम्बिका त्र्यम्बकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्षलाभ पितुपितः नागास्य नादहारत्वं घनराजा चतुर्भुज भूषितः स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुशपरश्वधैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतौः इहागत्य गृहानत्वं पूजां क्रतुं च रक्ष मे ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अञ्जनिः गर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा ॐ ध्यायेत् आजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामां कारूढ सीतामुखकमलमिललोचनं नीरदाभं नाना अलङ्कारदीप्तं तततमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टाढमरुकसहितम् अङ्कुशं वामभागे नाना अलङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॐ लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॐ सीताराम पवनसुत हनुमान राधे कृष्ण की जय. So we'll have Chalisa and bhajans now. ॐ
श्री गुरु चरण से रोज रजान, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर बिमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम की जय बोलो, तुलसी की जय बोलो, श्री रामायण की हो जय बोलो। श्री राम की जय बोलो, तुलसी की जय बोलो, श्री रामायण की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी भूत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। जय बोलो तुलसी की जय बोलो, श्री रामायण की। हाथ काज और ध्वजा विराजे, कांधे मोर जने हो साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय बोलो श्री राम की जय बोलो, जय बोलो श्री रामायण की। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाई, श्री रघुबीर हरषि उर लाइ। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत सम भाई। जय बोलो श्री राम की जय बोलो, तुलसी की बोलो, श्री रामायण की। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाई राजपद दीना। जय बोलो श्री राम की जय बोलो, तुलसी की बोलो, श्री रामायण की। तुमरो मंतव्य भीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लियो तारि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल दिलांगी गे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम मनोग्रह तुमरे तेज। हो जय बोलो श्री राम की तुलसी की जय बोलो, श्री रामायण की। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ के कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हो जय बोलो श्री राम की जय बोलो, तुलसी की बोलो, श्री रामायण की। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिन्हीं
अमित जीवन फल पावे हो। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो तुलसी की, बोलो श्री रामायण की। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासम, सदा रहो रघुपति के दासा हो। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो तुलसी की, जय बोलो श्री रामायण की। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाए, चाह जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न डरे, हनुमत से ये सर्व सुख करे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा हो। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो तुलसी की, बोलो श्री रामायण की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छोटे बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साधे गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा हो। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो तुलसी की, जय बोलो श्री रामायण की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो तुलसी की, जय बोलो श्री रामायण की। जय बोलो श्री रामायण की, जय बोलो श्री रामायण की। पवन तने संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युते हे भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते भगवान खाते नहीं, मेरी शबरी की जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं,
सुन्दरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Jai Shri Krishna. We are now going to do the Gita part, and we are busy with verse number 22 from chapter 7. So let us recite the verse. Sataya Shraddhaya Yuktas तस्याराधनमहि मीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्. We'll read the verse again. Sataya Shraddhaya Yuktas तस्याराधनमहि मीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्. सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्. So, the word Shraddhaya, which Bhagavan Sri Krishna uses in the verse, Shraddhaya, means faith. Shraddha, the word Shraddha means faith. And Yukta, Yukta means endowed with, combined with. Aradhanam, Aradhanam is worship. And the word Ihateha means who tries to engage in. What happens? Labhate, they obtain. Kaman, Kaman means desires. Maya, Maya means by me. Vihitan means granted. And he means certainly. So, Bhagavan Sri Krishna is saying in this verse that a person who is possessed, yukta, endowed with faith, a person who is possessed of that faith, he worships that form and from it attains his desires, which are in reality granted by me alone. So, this verse reminds us that faith is powerful. Having faith is a very powerful tool. But it also helps us to understand, this verse is also helping us to understand where all that power truly comes from. Now, in Sanatan Dharma, Brahman is the supreme being. Brahman is the infinite. Brahman is the formless source of everything that exists. And it is very important to understand that Brahman is not separate from the Devas. The Devas are expressions, they are energies
or they are sparks of that supreme being of Brahman, each representing a different aspect of the same supreme reality. So each deva represents a different aspect of the same supreme reality. So we can think of Brahman like the sun. The sun gives off many rays. Each ray has light and it has warmth. But all the rays come from the same sun. In the same way, Indra, Agni, Varun, these are all the devas that we invoke at the beginning of our satsang when we read the Ved mantras. So Indra, Agni, Varun, and as well as the other devas whose blessings we invoke at the start of satsang each week, they are like rays, powerful, meaningful, and real. But their strength comes from Brahman alone. So when a person worships a deva with faith, their prayer is valid and it is meaningful. The blessings they receive are real. But the verse teaches us that fulfillment of those desires ultimately flows from Brahman, because Brahman is the source of all energy, intelligence, as well as order in the universe. So let's use a modern day example to explain this further. Imagine charging your phone. You might plug it into a power bank, or you might plug it into a wall socket, or sometimes even your laptop. Each one can charge your phone. A power bank, the socket, the laptop can charge your phone. But all of them depend on electricity as the main energy source. So Brahman is like that electricity, unseen but essential. So the devas are different ways that energy becomes useful in the world. So in this verse, it encourages growth. It encourages growth in us in understanding that at one stage, a person connects more easily with a particular deva, which helps focus the mind and develop devotion. And as that understanding deepens, one realizes that every form of worship is actually a connection to Brahman, the same supreme reality present in all forms. So the message is this: we do not need to reject any deva or form of worship. Instead, we must see unity in diversity. We must respect every path, but understand that all prayers, all blessings, and all spiritual growth come from the same infinite Brahman. And when we realize this, then faith becomes inclusive, it becomes deep, and it becomes free from confusion. And that's when we will begin to see the world itself as connected, meaningful, and sacred. So here we will conclude the Gita part, and we'll now get ready for Ramayana part. We will do the Ramayana invocation mantra, and then we will go on to the set of chopais for today. जय ही सुमिरत सिद्धि होय सीताराम, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय सीताराम, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन,
मूक हो इवाचाल सीताराम, पंगुचरहि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल सीताराम, द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम सीताराम, तरुण अरुण वारिज नयन, करो सुममौर धाम सीताराम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह सीताराम, कुमारमन करुणा आयन, जाहि दीन पर नेह सीताराम, करौ कृपा मर्दन मयन, वंदो गुरुपद कंज सीताराम, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज सीताराम, जासु वचन रविकर निकर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। We are reading Balkan, starting from Doha number 310. बार ही बार सनेह बस, जनक बुलावहु सिय, लेन आइहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न ताहि अस सासुर होई, तब तब राम लखन ही निहारी, होई अहि सब पुर लोग सुखारी, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दोई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहि देखी जे आए, कहाँ एक मैं आजो निहारे, जनु विरंचि निज हाथ सवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही, उपमा को कह दास तुलसी, कहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन्ह सम एहि अहै, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, व्याही अहो चारि उभाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही, कहि परस्पर नारी, भारी बिलोचन पुलक तना, सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। So, the inhabitants
of Janakpur, uh, imagining, so to speak, how after the wedding, uh, Janak will repeatedly, out of love, invite Mother Sita to visit her mother's home. So, bara hi bar saneha basa. So, saneha basa, out of love. Sneha means love. Janak bulavu siya. Janak will call Sita. Siya means Sita. Lena a ahi bandhu do. And then at that time, Koti kama kamaniya, and then when it was time for her to return, the two brothers, handsome like a million cupids, would come to escort her. So, Vividha bhati ohi pahunai. And what is happening is, ho ahi sabapur log sukhari. So, the people of Janakpur kept talking excitedly. What did they say? They said, Ram and Lakshman will be welcomed in so many loving ways. By whom? Who would not feel happy to have King Janak and Queen Sunaina as in-laws? So, Priya Nakahi asa Sasura Mai. Sasura, who will not want to have in-laws like that? And it says that they are such warm and caring hosts. Who? Janak and Sunaina. Why? Because every time Sri Ram and Lakshman are seen, the people of the city feel great joy just by looking at them. So, Taba Rama Lakhana Nihari. Niharna means to look. When they look at Ram and Lakshman, they will feel just extreme joy within themselves. Then it says that Saki Jasa Rama Lakhanakar Jota. So someone pointed out that there is another pair who look just like Ram and Lakshman. Teise Bhupa Sangatui Dhota. Syama Gora Sab Anga Suhaye. Their bodies are, or one is fair, Syama Gora Sab Anga Suhaye, and the other is dark. Te sab kahi dekhi je aaye. Their bodies are perfectly performed, and everyone, te sab kahi dekhi je aaye, everyone who sees them cannot stop talking about their beauty. Kaha ek mein aju nihare. One person says, Nihara, again, as I told you, means to see. Today I saw them properly. And Janu Biranchi Nija Hatha Savare. Biranchi is Brahma, feet. It felt as if Brahma himself carefully created them with his own hands. Janu Biranchi Nija Hatha Savare. Bharatu Ram ki Anuhari. Bharat looks exactly like Sri Rama. Sahasa Saki Laki na Sakahi Naranari. So much so that the men and women cannot tell the difference at first glance. Sahasa Laki na Sakahi Naranari. Naranari, the men and women cannot tell the difference between Bharat and Sri Ramchandraji. Lakan Satrusudana Ekarupa. Satrusudan is Shatrugna. Shatrusudan, one who kills the enemy. So Lakana Satrusudana Ekarupa. And from head to toe, Nakasika from head, from toe to head. Te Saba Anga Anupa. So Shatrughan looks just like Lakshman. From head to toe, every part of their body is beautiful and flawless. Manabhavahi Mukha Bharani Najahi. They are so pleasing, Manabhavahi, so pleasing to the heart that Mukha Bharani Najahi, that words are not enough to describe them. Upama kahu tribhuvan kahu nahi. There is no one like them. Upama kahu, you cannot compare them to anybody, tribhuvan, in the three worlds. Then Tulsidas writes in a different meter now. He writes in a Chand meter. Upamana ko u kah das tulsi katahu kahi ko vid kahe.
So Tulsi here refers to Tulsidas. So Tulsidas says there is no comparison. Upama means comparison for them anywhere. Because Katahu Kavi Kovid Kahe. They even poets, Kavi means poets. Kovid means wise people. Agree on this. What? Bala Binay Vidya Seal Sobha Sindhu Inase Ehi Ahe. That their strength, Bala, Vinay, humility, Vidya, their knowledge, Sila, their good character, Sobha, their beauty, are as deep and vast as the ocean. Sindhu is the ocean. Inase Ehi Ahe. So they are truly unique. There is no one else like them. Puranari Sakalapasari. Puranari Sakalapasari. The women of Janakpur prayed with folded arms to Brahma. So Puranari Sakala Pasari Achal. Achal, Pasari Achal. So Achal is the front part of your sari. So they pasaro, they opened that palm. It's like, in an appeal position. Vidhi again refers to Brahma. Vachana Sunavahi. And what did they say? They asked for one blessings. Vyahi ahu charyu bhai ehi par ham sumanga lagavahi. That all four brothers should marry girls from this city. And so, filled with hope and happiness, they begin singing wedding songs. Ehi pura hama sumangalagavai. Sumangalagavai. They're singing wedding songs, confident that their prayer would come true. Kahai paraspara nari bari. And they began to speak to one another. Kahai paraspar. Paraspar means to seek one another. Bari bilochana pulakatana. And with their tears of joy, as the tears of joy filled their eyes and their bodies trembled with emotion, Sakhi Sabu Karaba Purari Punya Payonidhi Bhupado. They believed that since both kings were themselves oceans of good deeds, Brahma would surely reward them with this great fortune. So they were confident that because of Janak and Dashrath's great deeds, these four brothers will marry in this city only. So the passage that we have read shows us how people naturally admire goodness when they see it. See, the citizens of Janakpur are not just impressed by how Ram, Lakshman, Bharat, and Shatrughna look. They are deeply moved by who they are as people. See, in today's world, this is like admiring someone not only for their appearance, but or for their popularity, but for their character, for their values, and the way they treat others. So the excitement in Janakpur feels very modern. It is similar to how people talk about role models today. You know, athletes, leaders, influencers who inspire others through their humility, kindness, and integrity. But there's a difference, and the difference is important. The four brothers are admired not because they seek attention, but because their good qualities naturally shine through. So Tulsidas makes it clear that true greatness cannot always be compared or measured. See, very often we compare ourselves with others on social media. Right. We compare our looks with others. We compare our success with others, with other followers. We look at what others have achieved. And this episode, this prasang that we have read this evening, it reminds us that real worth does not come from comparison. See, the four brothers are described as unique. Why? Why are they unique? They're unique because of the strength, the knowledge, the respect, and the self discipline that they live with. So their values come from being the best version of themselves, not from competing with others. And of course, the women of Janakpur are praying for the brothers to marry into their city.
It shows us how society values people with good character. So even today, families and communities hope for relationships that are built on shared values, on trust, on goodness. It's not just about wealth and status. So their prayer also shows faith. When intentions are pure, then people believe that life will respond positively. So overall, this prasang is teaching an important lesson. It's saying that real admiration comes from how you live, not how you look. Strength with humility, knowledge with kindness, and confidence without arrogance are qualities that never go out of style. So, in any age, whether it's ancient or modern, people who live with values naturally earn respect and love. Here we will conclude the Ramayan part. कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति Mahadev ki jai. So we'll have bhajans and then we'll do arti and conclusion. सिद्धिविनायक नमो नमो, शक्तिबालका नमो नमो, सिद्धिविनायक नमो नमो, शक्तिबालका नमो नमो। नित्यानंद नमो नमो, सिद्धिविनायक नमो नमो, नित्यानंद नमो नमो, सिद्धिविनायक नमो नमो, बाल गणपति नमो नमो, षण्मुख सोदर नमो नमो, बाल गणपति नमो नमो, षण्मुख सोदर नमो नमो। मूषिक वाहन नमो नमो, मोहन रूप नमो नमो, मूषिक वाहन नमो नमो, मोहन रूप नमो नमो, शिव गणनाथ नमो नमो, चिन्मय रूप नमो नमो, शिव गणनाथ नमो नमो, चिन्मय रूप नमो नमो, सिद्धिविनायक नमो नमो, शक्तिबालक नमो नमो। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर बोले नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ॐ हर हर महादेव की जय ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ॐ जय जगदीश हरे जो ध्यावे पल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ॐ जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण कहो मैं किसकी स्वामी शरण कहो मैं किसकी तुम बिना और न दूजा तुम
किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण परा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। नारायणी नमोऽस्तु ते। नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयम् इति मामत्व क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षत्वां परमेश्वर। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी की जय। श्री बजरंगबली महावीर स्वामी की जय। जग जगनी गौरी दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सब पितर देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम। धन्यवाद। And I want to wish all of you everything of the best for Makar Sankranti, which will be observed tomorrow. Jai Shri Ram. Shubh Ratri.